I would like to invite Raj Gilda, co-founder of Lend a Hand India, and joining him for this session today is Shagun Sabharwal, Regional Director Asia Co-Impact, Amrita Mishra, a youth delegate, Neeti Sharma, CEO for Team Lease Digital, Vandana Bari, Head Girl Capital CIFF, I hope I got that right, and Pratiksha Mishra, student intern. Welcome. Over to you, Raj. Just a quick announcement so that you don't think that we had put Vimla madam's name and Himanshu Gupta's name to attract you here post lunch. But you know how unpredictable life is for IAS officers. So one had a family emergency, other had a government of media meeting, so they could not be here and they send their regards, right? So thank you, Shaili. As she mentioned, post lunch sessions are always a challenge, including myself. So we are going to start with a skit, because ये NEP 2020 she spoke about, लेकिन ये NEP 2020 है क्या? I mean, what is it about? And let's be the beginning of, we getting to know more about it. So I will invite my partner in crime here, Amrita here, for the just a quick 10-minute intro to NEP 2020. हाय अमृता, कैसे हो? Hello sir, I'm good. गुड, सिर्फ गुड? No, actually ज़्यादा ही अच्छे इतने सारे लोग देख के हाँ and little bit nervous. लिटिल बिट नर्वस, डोंट वरी. ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बाय द वे. काफ़ी लोगों को जानते हैं, बहुत सारा पैसा उनके पास, खुद के पास है, देने के लिए भी है. शी रन्स अ चॉकलेट बिजनेस, so after this is over, please place some order for the chocolate with her, so that's why I'm telling you, बहुत ज़्यादा नर्वस मत हो ना. Take their look at them as your future customers, right? In this, है ना. तो ये आपने आपका अभी क्या कर रही हो? What are you doing, Amrita, nowadays? Sir, I am in third year graduation doing BBA in Innovation Entrepreneurship with Venture Development from NSUT Dwarka. Innovation मैं तो एंड तक आया तब तो भूल गया मैं. Innovation Entrepreneurship with Venture Development. वाओ, ओके, कूल. तो अमृता, आपने जब पढ़ाई किया, अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, बट व्हेन यू आर अंडरगोइंग योर स्कूल एजुकेशन से अप टू ग्रेड 12 एंड ऑल, तो आपको क्या लगा, क्या चाहिए था, क्या नहीं मिला, क्या होना चाहिए था, आप बता सकते हो? Of course, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये नहीं मिला, ये चाहिए. हाँ. तो पहली चीज़, अप टू 10th इतना प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखो, हर सब्जेक्ट पे ध्यान दो. इवन इफ़ यू डोंट लाइक SST, साइंस, मैथ्स, यू हैव टू स्टडी अप टू 10th. और उसके अलावा आपको कोई वोकेशनल चीज़ें मिलती भी नहीं थी फॉर एंजॉइंग. एंड हाउ अबाउट स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एंड बहुत बोरिंग होता था? नहीं, वो होता तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था, बट उसके जो लेक्चर्स थे, हमारे क्लासेस थी, वो हमेशा कोई मैथ्स टीचर, कोई साइंस टीचर आके ले लेता था. अच्छा. तो एनीवे, सो योर विश इज ग्रांटेड नाउ, यानी अंडर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रहा है, उसमें आर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल एजुकेशन इज गोइंग टू बी मैंडेटरी अप टू ग्रेड 10. सो नोबडी कैन टेक अवे those periods from you, और कुछ भी नहीं कर सकते. So so I think जो आपको तो नहीं मिला शायद, लेकिन आपके जो यंगर सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे, और जो लोग होंगे, उनको ये अभी मिलने वाला है. Okay? So that's great, उनको मिलने वाला है, हमें तो नहीं मिला. But apart that from is life, सब कुछ सबको नहीं मिलता. That's true. Go ahead. Apart from that, 10th तक अगर ये कंपलसरी हो भी गया NEP में, देन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड रहता था. स्कूल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैक्स टू मैक्स, और 2 बजे के अंडर उसमें 6 to 7 क्लासेस डिवाइडेड रहती थी हमारे सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स के, तो ये चीज़ें और हमारी चीज़ें वो मैनेज कैसे होंगी? मैनेज कैसे होंगी? तो नहीं, इसके बारे में ही सोचा गया कि बहुत बार ये जो SUPW का पीरियड होता था या कुछ भी होता था, तो वो बहुत सारा मैथ का रिवीजन होता था ना उसमें, या एनुअल गैदरिंग हो रहा है उसका प्रैक्टिस कर रहे हो आप, लेकिन वो सही में वो कुछ होता नहीं था, राइट? तो इसीलिए अभी इसमें स्कूल टाइम में ही, यानी NEP में ऐसा कहा गया है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में, कि आर्ट्स एजुकेशन को 115 घंटे मिलेंगे, फिर फिजिकल एजुकेशन को 90 आवर्स मिलेंगे, और वोकेशनल एजुकेशन को 110 आवर्स मिलेंगे. सो दिस इज ऑन द टाइम टेबल, आपसे ये कोई नहीं छीन सकता. एंड यू कैन, आपका तो पता लें कि मुझे मैथ्स से बहुत बोर होने का, एंड ऑल दैट. तो अभी मैथ्स को भी यू कैन इमेजिन कि उसको भी सिर्फ 135 घंटा है, और बाकी सबको इतना हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स प्लस आवर्स. सो अभी आप देख सकते हो कि मैथ्स के कंपैरिजन में भी कितना सारा नंबर ऑफ आवर्स अभी मिल रहा है. सो आर यू हैप्पी? यस, वेरी कूल. और क्या चाहिए? सर 10th तक तो बात हो गई. नाउ जंप टू इनटू 11th एंड 12th. 11th एंड 12th में रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट्स, ईदर यू हैव टू टेक मैथ्स, साइंस और आर्ट्स, और इन तीनों में भी ऑप्शन नहीं है. लाइक मेरे पास PCM भी थी, मेरे स्कूल में PCB का ऑप्शन ही नहीं था, वहाँ पे सिर्फ मैथ्स और बायो थी, और मुझे मैथ्स नहीं चाहिए थी. स्टिल आई हैव टू टेक इट. तो ये सारी चीज़ें कैसे कंपनसेट होंगी? तो इसमें भी अभी, तो उसके पहले हमारा थोड़ा एक स्किप हो गया फीचर, तो पहले वो कवर कर देते हैं. नहीं तो हमारा स्किट, दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम 1 घंटे पहले शुरू करते हैं ना तैयारी ऐसे. तो बेसिकली द आइडिया इज कि if you are giving so much time to vocational education, art and craft, to sort of physical education, तो स्कूल पे टाइम टेबल जगह कैसे होगा? Because we all know, space on the school timetable is probably more expensive than real estate in Delhi, and also. So the recommendation of NCF has been that up to 30% of the content will be reduced for the academic subjects. So right from languages, social science and other things, उनका 30% भार कम किया जाएगा, and that is what will be allocating to the vocational and physical education and sports वगैरह, right? Now coming to your question about कि variety चाहिए, life is not a single skill. आप तो एंटरप्रेन्योर, आपको तो पता है चॉकलेट बनाने को क्या क्या लगता है ना. Yes, yes. ऐसे तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने के लिए NEP में ये भी कहा गया है कि 9th और 10th में, यानी ग्रेड 9th और, सो नॉट ओनली वोकेशनल एजुकेशन अभी कंपलसरी होगा अप टू ग्रेड 10, लेकिन 9th और 10th में आपको 6 सेक्टर का एक्सपोजर मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम से गार्डनिंग टू कोडिंग टू फैशन डिज़ाइन, फाइनेंस, वुड वर्क, कुकिंग एंड culinary आर्ट्स, राइट? सो सबको ये कंपलसरी रहेगा. एंड दिस 6 सेक्टर्स आर, यहाँ तो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया है, लेकिन 20 भी हो सकते हैं. स्कूल चूज कर सकता है कि वो 6 सेक्टर कौन से 9th और 10th में आपको दिए जाएंगे. सो देयर विल बी 30 आवर मॉड्यूल्स, जिससे आपको क्विकली पता चलेगा, लाइक फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस, फाउंडेशन ऑफ फैशन डिज़ाइन, फाउंडेशन ऑफ कोडिंग, फाउंडेशन ऑफ वुड वर्क एंड ऑल दैट. सो दैट उससे क्या होगा कि आप 9th और 10th में ये सब प्रैक्टिकल वे से करोगे, फिर 11th और 12th में आप सिलेक्ट कर पाओगे कि मुझे ये अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें जैसे दिखाया गया है कि आपको फैशन डिज़ाइन अच्छा लगता है, देन यू कैन गो एंड स्पेशलाइज इन फैशन डिज़ाइन, राइट? और क्या चाहिए? आज मेरा मूड, मैं मूड में हूँ, आप मांगते जाओ. सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 9th-10th में एक बच्चा इतना फ्लक्चुएट करता है, उसे पता ही नहीं है कि उसे आज अगर वो ये TV में उसने देख लिया मुझे एक्टर बनना है, तो वो 3 दिन तक बोलेगा मुझे एक्टर बनना है, बट उसके बाद कुछ और देख लेगा तो कुछ और बोलेगा. तो ये हमारी फ्लक्चुएशंस का अच्छा आंसर है. सर ये सब ले लिया हमने, हमने पढ़ लिया 11th में, स्पेशलाइजेशन में एक चीज़ कर भी ली, जिसकी वजह से हमें आगे एक स्किल मिल गई. फॉर एग्जांपल 11th में फैशन डिज़ाइनिंग ले ली तो एक स्किल मिल गई. बट व्हाट अबाउट एग्ज़ाम्स? हाँ, तो एग्ज़ाम चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए. अच्छा, तो नहीं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी. तो एग्ज़ाम का जो है, तो उसमें भी 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे in the NEP. There will be 2 attempts in the board exam. There will be semester wide exam as well. So that जो ये हमारा 10वीं बोर्ड एग्जाम का जो पूरा टेंशन रहता है ना कि इसके ऊपर क्या करें, उसके ऊपर ऐसे क्या करेंगे वगैरह, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, राइट? ओके, अभी पीछे वाले उस पर जाते हैं. हाँ सर, बोर्ड एग्ज़ाम्स ठीक है, हाँ. बट मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और अभी जैसे हमारे बीच में प्रतीक्षा है, उसने
ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्वेल्थ के बाद अपने आप को अपनी तैयारी को 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं और उसके बाद वो ग्रेजुएशन ऑप्ट करते हैं. मेरे कुछ पेयर्स हैं सिंस आई एम इन कॉलेज, तो वो ग्रेजुएशन में रह के ये सोचते हैं कि काश मुझे ये ड्रॉप ले लेना चाहिए था या फिर मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए था. वो अभी भी सोचते हैं कि क्या हम ड्रॉप आउट कर दें. उनके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. बट सिंस वहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़िट है कि अगर आप एक बार आ गए तो आप एग्ज़िट सीधा ग्रेजुएशन के बाद कर पाओगे. इसका कोई सोल्यूशन बच्चे के पास? ऑफ कोर्स मेरे पास है. देखो, एंट्री कम इन प्लीज, एग्जिट कम बैक प्लीज. ना ऐसे तो आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस NEP 2020 इज गोइंग टू बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट. यानी अभी जो होता है कि हमने पहली से पढ़ना शुरू किया, 10वीं तक गए, फिर 11वीं 12वीं, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. इट्स जस्ट वन वे ट्रेन जा रहा है, राइट? Whereas now you can take a drop, you can take a gap, you may have something more exciting to learn, so you may like to take a year break and otherwise too. So it is allowing for such multiple entry and exit, और वो स्टिग्मा नहीं रहेगा. बहुत बार नहीं तो लोग बोलती कि अरे अच्छा ये तो 1 साल कुछ पढ़ नहीं रहा, क्या हो गया, फेल हो गया क्या, there are variety of things which are happening. But in this case the NEP is going to allow multiple entry and exit, and accordingly academic bank of credit, basically जो ABC करके concept आ रहा है, academic bank of credit is like your passbook, and you earn credits and you keep sort of depositing into that, and once you achieve certain number of credits you will get your certificate, diploma, whatever that might be, right? So that's why this multiple entry exit is a very very critical sort of idea, right? और एक फीचर रह गया है, ये एग्जाम है. नहीं, I think one more thing is कि see, life is never about single thing, right? अभी जैसे if you say you do 11th and 12th, you do it in commerce, then you have to go for BCom, right? Yes. And all that. And BCom में also आपके साथ passive accounting, economics, वही subject होते हैं. लेकिन life is not a single skill. It is all about combined. जैसे आप अभी entrepreneur हो, chocolate बना रहे हो, तो you have to know about food processing, you have to know about accounting, you have to know about marketing, you have to know about money management. It is not about one thing. जो current education system is forcing us to pursue one stream. यानी आपने BCom commerce में शुरू किया तो commerce में ही जाते रहोगे, right? Arts में किया तो arts में ही जाते रहोगे. Whereas now it is going to allow you to mix and match. That means कि even arts का student भी automobile repair करके subject ले सकता है. Science का student also can take finance. Commerce का student can also take music. It is all about whether you are finishing a particular number of credit hours or not, right? जैसे मैंने US में पढ़ाई की, बिजनेस स्कूल में गया मैं, तो वहाँ पे गोल्फ सीखने को 1 credit hour था. दैट इज बिकॉज अगर आप बिजनेस स्कूल में जाते हो तो आफ्टरवर्ड्स बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए तो गोल्फ कोर्स पे होता है. सो इफ यू नो गोल्फ, then it is going to help you to sort of study further, right? So I got a 1 hour 60 hours जो मुझे करने थे मेरे MBA के लिए, तो उसमें से 1 घंटा मेरा गोल्फ का था. तो I think so all of us are going to have a mix and match option as well. आप स्ट्रीमिंग तो कर ही सकते हो, यानी अगर आपको कॉमर्स बहुत अच्छा लगता है और कुछ सीखना नहीं है जिंदगी में तो भी ठीक है. बट नाउ आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू ऑप्शन जो अभी ये NEP 2020 में नहीं था, राइट? सो anyway, so that was our quick primer on NEP 2020. So thank you, Amrita, for being again a partner in crime, for this. Right? Better up. You should sit. Cool. So I think hope you got the gist of this. A 10-minute crash course in NEP 2020. What is coming along? It's a 600-page document जो हमने 12 मिनट में खत्म किया, and all. And I hope NCERT से कोई इधर नहीं है, because I am sure I've taken my own creative liberties, to explain the concept, concept here. So I think we'll get started with the panel now. I would like to invite, Shagun, Vandana, Niti, then Pratiksha, please. So quick intro more on the contextual way for people. So Vandana is from SIF, Children's Investment Fund Foundation, who is focused on
sort of girls gender empowerment. I'm going to really short it, so that people get a idea. Niti is from Teamlease. She is the CEO of Teamlease Digital, which is one of the largest employer in India. So representing the industry side over here. Amrita के बारे में तो आपने सुना ही, student, entrepreneur, everything, and my partner in crime, here. Shagun is from Co-Impact, which is sort of a donor collaborative funding system change, approach. And in her past, she has been with JPAL and other organizations, so more represent the evidence side as well. And Pratiksha here, my dear friend. By the way, big round of applause for her. Unka first time on the stage. So Pratiksha did an internship during her 12th grade. So she is going to share more about her experience of being a vocational education student and how sort of, it went about, right? Good. So Niti, will start with you. ये जो multi-sectoral approach बोला जा रहा है, right? कि what does it mean? I mean, what will it do? Why it should be there? And what it will be helpful for, Sure. Thanks, Raj. I think it's a great idea to bring in multi-sectoral skills at the student level. But what I worry about is how will it get done, right? Do the schools have adequate know-how to mix the right skills at each student level, right? They will not be able to do it individually because personalized learning in an offline format doesn't work for schools, which means that they will have to do it in cohorts, in segments of students. What will work for Amrita will not work for Pratiksha. So I think that combination, and you gave your US example, I know they do it beautifully, but combination of fine arts with STEM subjects is needed right now. As an employer said, I can tell you that soft skills are as important as hard skills in today's world. Everyone keeps talking about it. This is a good foundation to get students started. But my worry is execution, like all schemes and all regulations that we actually see in the country. If the schools and the institutions do not have the right know-how, then we will probably not be able to do a good job. And I know you are working with a lot of them very closely, so you have a tall task with you. But if we do it right, combination of fine arts and STEM, I think is a great combination for all students who want to pass out in the future. And like she said, हमारे ज़माने में नहीं था, कम से कम आगे मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है. हाँ, वो बोलते हैं ना, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. Absolutely. Like that. So I think on that note, so Niti, even this is funny, इसके बारे में भी एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको आंसर करने के लिए. So can we play the clip number 2? जब मैं 8th में थी तो मैं चाहती थी कि मैं मल्टी स्किल लूँ. मैंने मल्टी स्किल में बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा, मैंने फूड प्रोसेसिंग, गार्डनिंग, इंजीनियरिंग, वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैंने लकड़ी के बारे में जाना कि लकड़ियों में हम कैसे काम कर सकते हैं, टूल्स के बारे में जाना, जिसको हम पेज कर सकते नहीं क्या बोलते थे, उन सब के नाम जाने कि हम कितनी अच्छे तरीके से उनको हम बोल सकते हैं, सबके बारे में जाना. और हम ये जाना कि कैसे यूज़ कर सकते हैं उनका. और हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई. हमने सर्किट्स बनाए जिसके बारे में हमने ये जाना कि हम कैसे बल्ब लगाते हैं. मुझे तो बल्ब लगाना भी नहीं आता था. मेरी मम्मी तो खुश है. मतलब जब मैंने पहली बार, मैं तो बल्ब लगाने से बहुत डरती थी. जब मैंने लगाया तो मेरी मम्मी खुश हुई कि मतलब मैंने कुछ सीखा. और जब फूड प्रोसेसिंग का प्रैक्टिकल हुआ था तो मैंने अपने घर में भी जाके बनाया था. तो मेरी मम्मी उससे भी खुश हुई कि हाँ कुछ तो सीखा. और मैंने गार्डनिंग में सीखा कि हम मतलब कृषि जो किसान हैं वो कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली. कि हम गांव जाते हैं तो मुझे तो कुछ पता होता नहीं है, पर फिर भी सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम कैसे खेत में मतलब पेड़ पौधे फसल वगैरह उगा सकते हैं, कैसे खाद बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाई हमें. और मैं चाहती हूँ हम जैसे मल्टी स्किल सीख रहे हैं और भी बच्चे मल्टी स्किल सीख पाएँ. Anyway, so that was a girl from a rural high school in Haryana. To the next Yes. one, I just wanted to add that I think we have to take cognizance that vocational education is for our kids as well. Yes. It's not just for tier 2, Yeah, tier 3 or village kids, because today, like she said, bulb change करना सीख लिया. For our हाँ. kids, there is an app at home saying चलो उसको electrician को बुला लो, bulb change कर लेते हैं.
You know, I think we have to do away from all of that and give the right signaling value to vocational education, Yes, yes. along with everything else that we're Yeah, doing. So yeah, sorry, I just sure. barged in, but I had to make. No, no, absolutely. Completely agree with that. So moving on, so Vandana, eliminating gender bias and, helping girls to achieve full potential is sort of focus area for SIF, right? So how do you think the skill education within the NEP 2020 is going to help us to achieve this objective? Thanks, Raj. A very relevant theme for today's discussion. Let me get some facts here and why, and probably then I'll, speak of why vocational education. The work that we do in Girl Capital is to build school-to-work transition pathways for girls in the age group of 14 to 25, because there's enough evidence to state that if girls are educated, skilled, and have equal opportunities for their employment, it will contribute to not only their well-being, but also well-being at the family, community, and the country. In India, even today, 1 in 4 girls in the age group of 14 to 17 is at risk of child marriage. In India, while we have made significant progress in enrolling girls in the primary and upper primary education, and many congratulations to the efforts that have been put by government of ensuring 100% GER. The same results are not yet replicated or scaled to the secondary education. Of every 10 girls who enroll in grade 1, only 4 complete secondary education, which means 6 are still dropping out of secondary education. And there are 3 main barriers or 4 main barriers. One is a cost, because you move out of RTE, right to education. So the poor families have to pay for the cost of education. And if it is about choosing between a boy and a girl, unfortunately, many vulnerable families choose to support boys' education over girl. The second is learning barrier, because up to grade 8, you're not detained for your performance, academic performance. So your learning assessment starts only from grade 9. And without an academic support system in your family, many girls from poor families find it difficult to understand concepts, especially maths, science, and they fail, which is the 30% of the dropouts that happen in secondary grades is because of poor learning outcomes, 20% cost, and the remaining 25%, which is a big chunk, is because of lack of awareness and about the income pathways. Why should you support, or why should I complete grade 12 or grade 10 if I have to earn the same money in the informal sector that I see or I'm aware of? So the economics of completing secondary education is not known to the girl and the family, and which is where anything that improves her awareness, access about income opportunities, it could be that lever, which could not only support enrollment, but also support continuation of girls or completion of secondary education. And we have seen through our work in the state of Rajasthan with Department of Education that if you are able to create aspirations both for the school and for the girls for vocational education, girls are interested, to take up such courses. It is about, like you said, 6 courses. Who decides for those 6 courses? Because unless you do career counseling, because career counseling is I think one of the important aspects that NEP speaks of. And there was a policy announcement by Ministry of Education last year, which speaks of 7,000 career counselors to be deployed in every state. So you need to create aspirations for these gardening, for these fashion designing courses, because if you are able to create awareness, girls would want to enroll for those programs.
And I'm sure we will speak about it, the internship, which is a very integral part of vocational education. We need to give that exposure to girls about, or students for that matter, about what it means, to be working in a factory setup. Even today, for many of the employers, for many employers, we hear that referrals or role modeling is one of the effective channel to push girls into education, to push girls into jobs. You put one girl into job in a village, you will see she will pull 10 more girls. So early exposure through internships is that, I think, beautiful concept, which if done well, will put many girls into jobs. And we've seen that in the state of Rajasthan, where we are supporting government for improving enrollments of girls into the in-school vocational program. In the last 3 years of our partnership, we have been able to orient school principals. Many school principals, like, we see the vocational education coverage, कि इनको नहीं करना है, क्या करेंगी? So it is about creating that demand value for school principal. It is about creating aspirations for girls through career counseling. And it is about putting quality into the implementation of internships and apprenticeship. I think we will be able to address the biases that exist for girls, that inko bhi chahiye, and they need that opportunity. Yeah. And Vandana, I think you set it up very nicely for my next video clip, actually. So हमने ये सब rehearse किया था, ऐसे बोलो, so that I can say that. So can we please play clip number 4? It was said that only boys can do this because it is related to electrician field or architecture field or your other fields which are related to only boys. But it's not important that boys can do everything. It's only that we think this. It is our thought, not the fact. So I just want to say to all the parents to please have the girls also, support them. They are not just to marry and prepare the food for their family. They can do everything if you will support them or if you will help them. Anyway. So I think this is what a proper skill education can do, right? I mean, it is about being aware, it is about being able to negotiate, it is about being able to demand, and all. And I think jobs and employment will happen, but before that, this thing, a girl being able to speak so confidently of something she needs, that is what it is all about, at the end of the day. So Shagun, hello. So Shagun represents Co-Impact, and Co-Impact is known for a systems change approach and fair disclosure. We have been funded by Co-Impact, and I think the systems change approach as well as the gender empowerment, which are the two focus areas for Co-Impact. How do you think this whole operationalization of NEP 2020, if we can call it, that way, one can achieve this, objective? Sure. So first, I just wanted to say that I am just loving how interactive and you are using so many multidimensional ways of engaging. It's not just another boring panel discussion, and I really like the skit. Very well done, I have to say, and all these clips that keep coming up. It's very well orchestrated, although I've just come like 2 minutes before, so I don't know how you managed to pull it off. But I will say that I think, and I don't want to bore people with systems change, especially when we're discussing such interesting topics. But I think Co-Impact's approach is really, we really try to bring together local change makers and funders from around the world to say how we can improve the health, education, and economic systems so that they can really be inclusive and then they can work in a long-term way, right? So rather than fixing one problem or the other, if we go into the root cause and see how can the education system itself deliver better,
then can the change be more durable, right? And so the whole idea for Co-Impact was to come up with this model of pooled funding so that the funding goes longer, the funding can be for a more scale of the problem. Now, coming specifically to this, and we are very proud to be supporting Lend a Hand in the amazing work that Raj and his team are doing. What I would say is, like, all of this sounds so abstract. So in the context, when we had the skit and all of the clips that we are seeing, what would systems change mean when you're looking at NEP, or when you're looking at all of these different outcomes, whether it's school to work transition, etc.? So here the idea is that, can you take the system of secondary education and make that something that can then help students on these pathways, right, beyond school? So when we talk about school education, typically it's very much about the learning, whether the learning goals are happening, whether the learning outcomes are being met. But can the existing system of secondary education work in a way that it can also start to look at other outcomes that should be actually a part and parcel of a good education system? So it's not saying that you create a parallel system, but within, so all of the things that were shown in this kit are actually tweaks that are being made to the current system. And if, of course, it has to be done with high quality, but you're taking away a lot of time that is being spent on academic subjects, and then you're opening the place for these newer things to come in, right? Now there's a question, how will you have curriculum development? How will the teachers be trained? How will you assess? All of that comes in. And here again, the system means that you have certain policy windows, you have certain budgets that have been allocated. But the next question becomes, how do you actually use it? How do you bring companies, how do you bring the supply side into the equation, right? So now there is recently you would have read in the news, there's an internship program that was announced as a part of the budget. So all of these things are now happening, and organizations like Lend a Hand, which are civil society organizations, can really work in partnership, and private organizations can, to make the whole system work better together, right? So I just wanted to give an example of what it means to have a systems approach versus saying, okay, I will run amazing classes, I will run amazing vocational trainings, which are also needed, but they will only be able to impact a few, and once the funding ends, how will those models sustain? So I'll stop there. Thank you. Thank you, Shagun. And as you might have, anticipated now, she's teeing up us for another clip, in that. So can we please play 3 and 3B? Hello, my name is Alia and I'm student of 12th class from SKD Samarka. As I've chosen IT subject, and from this I'm getting opportunity to come on workplace environment, and it is very helpful for me. As earlier I was thinking that it is not useful, also it will not help me, but my teacher motivated me to do this, and then I came also and I saw so many changes in me. As I was feeling there was a lack of confidence in me. So when I came here, so it increases my confidence power. It increases my communication skills also, as I was feeling shy to speak to anyone. But here I improved these things. I talked to, there are so many sirs, to my colleagues also, and it will help me to do job also after 12th, because after 12th I want that I may do job also and I may do study also. So this will help me a lot, because I have worked here, so it is experience here. So whenever I go for the job, so they will ask for any experience, so I can say that okay, yes, I have come here, workplace environment, I have done internship also, so it will help me to do that. So they will also say, so they will give me job easily, and I have done HTML, CSS and JavaScript. It will help us to create a web page, it makes a dynamic web page. So I want to make my website also where I can tell my things and my opinions also on any particular topic. So it will help me a lot, and I suggest. And if we learn in school, we learn the theoretical things only. So here we can learn the practical things also, because in school in 9 periods we cannot get the time also for doing the practical and all. But here we can get time easily and we can do the practical thing. So this, and I suggest to other students to do this, because then you will know your importance and you will able to know your skills also. So I want you to do this internship programs. And चौहान है,
मैं SNDT कॉलेज में पढ़ती हूँ करवे नगर में। मैं रिटेल की हूँ। वो सब्जेक्ट कुछ सबसे अलग है, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है। और जब मैंने 11th स्टैंडर्ड के छुट्टी में जब मैंने इंटर्नशिप किया तो पाषाण में है वो दुकान, तो उसका नाम फैशन मार्ट है। मैंने और उसने साथ में किया था। तो मैंने वहाँ पर 2 महीने काम किया था। वो आंटी अंकल मुझे अपनी बेटी के जैसे ही मानते हैं। और जब भी मैं उस दुकान में काम करती हूँ तो मुझे कॉलेज के साथ काम भी करती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देते हैं वो। और मैं अपने खुद का खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी कि पहले मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। हम 6 बहनें हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन मुझे 10th में 96 मिले रिटेल में, इसलिए मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम ये सब्जेक्ट करो, तो इसलिए मैं करती हूँ। और मेरे पापा मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम मेरी लड़की नहीं मेरा लड़का हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उनसे बहुत सपोर्ट करना चाहिए घर में। और मैं मम्मी पापा को एकदम से कह सकती हूँ कि मैं आपकी लड़की नहीं लड़का हूँ, तो मुझे घर में बहुत सारे सपोर्ट कर। पापा 10वीं के बाद पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने बहुत सारी जिद करके मैं 12वीं में आई हूँ अभी। तो मैं पापा को ये कहना मैं अपने पापा को साबित करना चाहती हूँ कि मैं लड़के से कम नहीं। मैं 12th में SNDT कॉलेज में सीखती हूँ। 11th क्लास में हमें इंटर्नशिप करने के लिए कहा, तो इंटर्नशिप बोले तो मालूम ही नहीं था क्या करना है। तो हम लोगों ने सब पूछे कि क्या करना है, तो वो बोले तुम किसी भी स्टोर में जाके 80 घंटा उधर काम करो। तो हमारे घर के बाजू में फैशन मार्ट था, तो कॉस्मेटिक और ज्वेलरी का था। मैं उधर गई, मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं बाहर काम करूं। फिर भी मैंने कोर्स से बोल के लड़ के उनसे काम करी हूँ मैं। और बहुत कुछ नया सीखने मिला कि जैसे कुछ प्रोडक्ट है तो उसे बेचना कैसे, उसकी ट्रिक क्या है। तो मैंने भी बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट बेचे। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर मेरा एजुकेशन आगे बढ़ तो भी मैं घर में काम करूं। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जो आंटी अंकल थे वो एक दिन, मेरी जो फ्रेंड है, हम दोनों 21 में काम करते हैं, तो उन्होंने पूरे एक दिन हम दोनों को दुकान संभालने के लिए कहा और हमने बहुत अच्छी तरीके से दुकान संभाला था। हमने ऐसे ही छोड़ दिया इन केस कोई तो so I think after watching the clips we have an intern here who has completed her internship during grade 12, प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? ये तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस भी आई होगी ना। हेलो एवरीवन। हाँ, तो जो भी इन्होंने ये बात कही मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी कि फर्स्टली जब हमने वोकेशनल एजुकेशन लिया तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ही नहीं पता था हमको कि ये क्या है। हमारे टीचर्स ने बोला कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम है, आपको पढ़ना होगा, आपको अच्छा लगेगा। बट इंटर्नशिप के बारे में मुझे 11th में पता चला, जब मैम ने बोला कि आपको इंटर्नशिप देनी होगी 80 आवर्स की, वो भी स्कूल में नहीं कहीं और जाके। मेरा हेल्थ केयर ट्रेड था और मैंने हॉस्पिटल में जाके मतलब 15 डेज़ ट्रेनिंग भी ली हुई है। तो तब भी जब मैंने ट्रेनिंग की, ठीक है, तो सिर्फ मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मैं आना जाना सीखूंगी। और चैलेंजेस मेरे ये थे कि मैं अपने घर से बाहर अकेले कभी नहीं गई और मुझे अपने स्कूल से डायरेक्ट वहाँ तक जाना है हॉस्पिटल, और मैं कैसे अकेले जा पाऊँगी। बट 15 डेज़ में मैंने वो चैलेंजेस को पूरा किया, अपने आप को ही चैलेंज किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। और कॉन्फिडेंस जो कि आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं वो भी नहीं बोल पाती थी, अपने घर में भी नहीं बोल पाती थी। बट मैं आज यहाँ बैठी हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो बस ये, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो हुई है मुझ में कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब कि मेरी ड्राइंग और हर चीज़ मैं ड्राइंग में ही करती थी, किसी से बोलना नहीं। बट मैं सिर्फ अपनी मदर से बोलती हूँ। और इंटर्नशिप फर्स्टली जब मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये इंटर्नशिप क्या है, तो उनको भी शायद इतनी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने ये बोला कि हाँ ट्रेनिंग देनी होती है आपको स्किल्स पता चलेंगी, हर चीज़, ये नॉर्मल चीज़। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा, पेशेंट से इंटरेक्ट किया और स्टाफ से मिले, सबसे इंटरेक्शन मतलब बातचीत हुई,
कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं। और हमने स्किल्स में जैसे इक्विपमेंट के बारे में जानना, जो हम बीपी भी नहीं ले पाते थे, आज मेरे घर में मैं बीपी लेती हूँ, ठीक है। और सीपीआर में भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, मैंने सीपीआर भी दिया था और मुझे प्राइज़ भी मिला था क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सीपीआर किया था। लाइक सीपीआर मीन्स ये होता है जब हम हार्ट अटैक जैसे आना होता है तो कैसे हम उसको बचा सकते हैं जब एम्बुलेंस जब तक आ रही है, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। तो जब मैंने दिया अपने पेरेंट्स को तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फर्स्टली मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इंटर्नशिप मेरे सामने आई तो हमारी क्लास के बच्चों का ये रिएक्शन था, है ये क्या होता है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ चलो चलते हैं, ठीक है। फिर जब मैंने इंटर्नशिप दे दी तब भी मुझे नहीं समझा कि ये ठीक है, हाँ हमें स्किल्स मिल गई, अब इससे क्या फ़ायदा। हमने अपने टीचर से भी पूछा तो उन्होंने बोला आप अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको जॉब मिलेंगी, सब कुछ। तो हमने भी सोचा सारे जो बच्चे थी उनको तो ये मतलब होता है कि हाँ भाई जॉब मिलेगा तो चलो कर लेते हैं, तो मैंने भी यही कर लिया। फिर मैम ने हमारी एक दिन ये स्किल मित्रा के बारे में बताया, वो तो चलो अलग टॉपिक है, बट मैं वोकेशनल एजुकेशन क्यों, मतलब वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू मुझे इंटर्नशिप करने को मिली और साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस तो आया ही, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हुई, ठीक है। और इंट्रोवर्ट से मैं एक्सट्रोवर्ट हुई हूँ, ठीक है। साथ ही साथ शायद मैं और भी आगे पहुँच पाऊँ। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो और जो बच्चे वोकेशनल एजुकेशन को ये सोच के लेते हैं कि हाँ ये सिर्फ जॉब दिलाता है, नहीं, जॉब तो देता ही है बट आपको बहुत सारी स्किल्स भी सिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भाई हम भी जब और सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बल्कि जब हम जब ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद हम सारी चीज़ें करते हैं, लाइक बीपी और ये सब हम जब स्कूल्स में होते हैं थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं बस। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगी, जब हम वहाँ पर जाएंगे, सीखेंगे, सबसे इंटरेक्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने 12th में ये सब यूज़ किया, लाइक मैं जब नीट देती तब मैं उसके बाद सीखती सीपीआर, बीपी लेना, लाइक फीवर चेक करना। मशीन भी नहीं होती हमारे पास, लेकिन अब मुझे पता है तो मैं आराम से बैठ के करती हूँ। हाँ मम्मी आ जाओ, आपका सीपीआर वो बीपी कर देती हूँ, मैं फीवर चेक कर लेती हूँ, मैं दवाई बता सकती हूँ कि मैं इस टाइम पे कौन सी दवाई लेनी है। लेकिन अगर जब मैं डिग्री लेती तब मुझे समझ आता, बट मैं 12th में ही होते हुए भी मैंने किया और मैं घर बैठे ही समझ लो मेरे लिए घर में डॉक्टर ही हूँ मैं। अभी डिग्री नहीं है मेरे पास लेकिन मैं डॉक्टर ही हूँ समझ लो। और हाँ ठीक है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन हाँ मैं मतलब इंग्लिश तो मैं समझ जाती हूँ बट कभी ऐसे कन्वर्सेशन नहीं किया इंग्लिश में। और नहीं इसी लाइन में जाना है, मेडिकल, बिल्कुल फुल इंटरेस्ट। अगर डॉक्टर नहीं बने तो मेडिकल हॉस्पिटल में ही, ठीक है। और जो हम केसेस सुन रहे हैं आजकल, तो 2-3 बार मेरा भी मन हटा कि हाँ भाई क्या करना यार, और दिल्ली से भी बाहर जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए, जैसे एम्स के लिए। और दिल्ली एम्स तो बहुत ही फॉर्चुनेट लोगों को मिलता है। तो हाँ अगर मेरा गुड लक हुआ तो मुझे भी मिल जाएगा और मैं भी अपने घर में डॉक्टर बन जाऊंगी। लेकिन मेरे घर में जितने भी बहनें हैं उन सब की शादी हो गई है। क्या कहना चाहते हो? बोल दो। कोई बात नहीं है ना। हाँ तो एक्चुअली मुझे तो लगता है कि प्रतीक्षा आप एम्स जैसे आपने बोला आपको जहाँ चाहिए वहाँ सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। द वे यू हैव, आप हमें जरा भी लग नहीं रहा था कि आप पहली बार इस तरह से स्टेज पे बात कर रहे हो, एंड कितनी होनहार, एंड आई एम श्योर आपने हम सबको इंस्पायर किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ हमें आगे भी जाने की ज़रूरत है। सो थैंक यू प्रतीक्षा। ये जो इंटर्नशिप के बारे में बात की ना, नॉर्मली आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर कि जब भी हम इंटर्नशिप बोलते हैं तो ऐसा हम सोचते हैं कि हाँ ये
सिटी बैंक में इंटर्नशिप करेगा या फिर इधर करेगा, बजाज फिंसो में करेगा, कुरुक्षेत्र है, so I should mention that, and all. And we don't think कि local employers can be interns, right? So right from beauty salon to auto garage to whatever it can be and all. And they have been excellent providers actually, in terms of what they have been able to learn. And in fact, I have my personal experience because I am a son of a Kirana grocery store merchant. I am a Kachhi Gujarati, So since 9 years old, I was an intern to my dad. And, Pitaji ne laga diya jhadu marne ko to, manage the cash, go to the wholesale market, go to the bank and do whatever needs to be done. So I think there was an excellent schooling outside of school as within the school. And I think we are very glad that such internship with local employers is part of the curriculum now, which can bring even the entrepreneurial aspect into that, right? So Niti, since you're representing the industry, and industry in the sense I like you to speak about MSME, because normally the skill development efforts have been, I keep joking that the whole entire skill development or effort is organized around organized sector, in that, as compared to what we call unorganized or informal, which is really growth of the economy. How do we sort of, bring them into the picture here? I think you said it very rightly, Raj, because as large corporate houses, all of us have a certain process of taking interns, apprentices, first-time job seekers, probation. So, pura process hota hai, right? But MSMEs mein there's a challenge because they don't have the time, patience and capital to be able to experiment ki kisko lena hai, kisko nahi lena hai, right? They need people who are productive immediately. But at the same time, if we don't do this en masse, we will not be able to actually solve the internship stroke, apprenticeship stroke learning problem in our country. Because like she said, she's in Delhi, so she could fortunately get something which was within the city. Lots of tier 2, tier 3 cities don't have apprenticeship or employment opportunities today in our country that pay a decent wage. 1500-2000 में फिर भी मिल जाता है, but you will never be able to get a 5,000-10,000 rupee apprenticeship or internship, and that is what an MSME can actually bring to the table. In fact, the last budget also spoke about 1 crore interns to be created, internship opportunities to be created across 500 listed or large corporates. I think we need actually a regulation for MSME to be able and support them to create number of internships and apprenticeships. The 5,000 rupees payback again that came as part of budget, right? Can we actually do more for pure MSMEs? That's where even though they'll not be able to take high volume interns, but they'll be able to still take the people who are in smaller towns. Because you can't expect a Pratiksha to migrate for an internship or an apprenticeship. As a parent, I wouldn't allow my kids to migrate at that young age. I don't think no parent will allow that to happen. But unfortunately today, opportunities are in the southern and the western part of our country. But our labor market supply is actually coming from the northern and the eastern part of our country. So there's this whole demand supply mismatch that we have at the moment. Unless we balance that out with SMEs and MSMEs also, I think we will have to create a systemic solution to it rather than कि आप ले लो अपने किराने की दुकान पे कर लिया. I'm sure you are not paid a stipend at that point. But today every kid will need a stipend, and to what Vandana was mentioning, we will have more dropouts between school to secondary school to higher education if we don't have stipend paid internships or apprenticeships, so that students learn on the job, they earn while they learn, and they get, credits, like you mentioned NEP, right? They get credits at every step or every stage what they're doing. When we are able to create that systematically, I think then we'll probably be able to resolve some part of the solution. I don't think we'll have all answers at one go, right? And to what she said, right, I think skills milte hain, confidence milta hai. It's important. I would just add to what Pratiksha was saying. I think a lot of us are from the skilling ecosystem here, and it's very close to our heart. I think you're doing incredible job with all the videos we saw. But I think we have to go beyond skills and certificates to employability and employment. We should not stop
our role as इतने लोगों को skills दे दी, इतने लोगों को certificate दे दिया, my job is done, right? Are we able to create employability and that much more employment linkages is the outlook that even NEP actually has. But again, I come back saying execution is key. Sure. So. Thank you. Yeah. Thank you, Niti. So one quick announcement, you can answer your questions on this, scan, which will take up in the next, 10 minutes now, right? So Shagun, coming to you, and taking you back to your evidence days and JPAL, other things, Tuki, such kind of intervention, system change or vocational education and all, has a very long sort of, cycle, right? In order to really get some tangible, but then on the other hand, we have to show the impact in order to get the policymakers going, for funding, in order to get, parents and other things too. So how do we balance between these two conflicting sort of, needs here? Yeah, no, absolutely. I think, impact is a word that everyone's sort of chasing and everyone wants to hear ki aapka impact kya hai, what's the business case for your thing. And it's true that, you are putting, it's always a trade-off. You're taking resources from somewhere and putting it into that. So impact is important. But I think many times we so much over-index on the end goal, which like you said, will take many years, right? And what we forget are the intermediary outcomes, which I think are sort of the signposts that are telling us that we are in the right direction. So that's not to say that we shouldn't look for the ultimate outcomes that matter, right? So in this case, for example, what could be those outcomes? So you could say that are the income of 10 years down the line, students who went through an internship program, who had access to these vocational skills, went through, are they, being able to make income? Are they contributing to that income? So that is something we can look at versus those who did not have access to all those. So you would expect there to be that difference. But at the same time, like we've heard from Pratiksha, there are so many other things in the middle that have happened. The confidence. Now your confidence, let's take that as an example, right? Your self-efficacy. All of those are good things that will help you in your job, that will help you if you take on your own business, because when we say jobs, we're also talking about self-employment, because we'll never be able to create as many jobs as needed. So self-employment, entrepreneurship will be another pathway. But that same self-efficacy and confidence can also help you negotiate better at your household level, right? And going back to the point that Vandana was saying, girls and women have so many vulnerabilities that they need a lot of this as well. So what I'm saying is that where all will you measure the outcomes and say, okay, this is changing, but there are so many other things that are happening as a spillover to this process. And how many of us are actually also measuring that? So what I'm trying to say is that impact is important, we need to measure it, but we also have to see on the journey what all is changing and be more creative and innovative in our measurement and even the evidence base. So if we only fixate on income, we're also missing out on so many other things that can be happening. I'd like to add to what Shagun is saying, how we see for our work in SIF is that for anything that you need to do around system change, given such a diverse country that India is, what works in Rajasthan may not as is work, say, in Jharkhand or as is work in Tamil Nadu. So you need those local proof points to say, okay, what are some of the localized contextual solutions, say, to improve or implement NEP in some form and shape, and what are some of the levers of success around that, and then probably define the longer term journey around it, do a minimal demonstration in some other states to test contextualization in Tamil Nadu, especially the internships. In a place like Rajasthan, which is 80% rural, you will have to depend upon the local economy for internships. You will never get formal internship opportunities. May not be for 80 hours, but what can you optimize as an exposure? So I think, setting those building blocks, and as Shagun said, the intermediary outcome for that long-term goal works. As long as the trend is
Yeah, going to others, right? Yeah. Just one more thing, Raj, on this. Sure. While we're talking of MSMEs and, Vandana mentioned rural, whenever we talk of internship, it should not be that people start abusing that, right? We've had, cases earlier. It just becomes that we are using them as low-cost laborers as against actual interns who are learning on the job. Yes. Right? So one is how much can an MSME or an SME, afford to pay, but what is it that they're able to give to the students? Yes, I mean, in our country, we've been talking about the whole German system because half of our people have learned the system and come back. But there we know that as corporate houses or as employers, it's my duty to give back to my next generation. We don't have that yet in our system, and unless we have that, each one of us individually, scaling this will become a challenge. And we don't want the scheme or any of the schemes to be abused as exploiting, and that's where the challenge will be. I'll just add one more point to what Shagun said in terms of impact. Having actually put in about 50,000 odd kids in the apprenticeship linked learning programs, the wage premium actually kicks in after they get into the first job. And it does kick in. Employers don't pay at the first job, but over 12 to 18 months, the wage premium definitely kicks in, because employers are more than willing to pay for learning and pay for a kid who's actually going to get productive on the shop floor. Right? So that really happens, but it happens over a period of time. So Amrita, we have heard a lot about jobs and employment and other things too. तो बताइए चॉकलेट का बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ? ये स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हुआ. 11th स्टैंडर्ड में हमारा एक स्कीम आई थी बिजनेस ब्लास्टर करके. आई नो आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, बट उसमें क्या था, उसमें हर एक स्टूडेंट को 2000 रुपीज़ दिए गए थे फॉर एक्सपैंडिंग, कि आप कोई भी अपना एक आइडिया, कैसा भी आइडिया हो अपने आसपास सोच के, एंड टर्निंग इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड आप उसे रन करो फॉर सम टाइम एंड सी कि आप क्या चेंजेस हैं, आपको वो कंटिन्यू करना है, आगे नहीं करना है. सो उसमें से स्टार्ट हुआ ये. मैं अपने फ्रेंड से मिली, ही हैड आइडिया अबाउट इट कि कस्टमाइज चॉकलेट्स बनाते हैं, क्योंकि चॉकलेट ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं बट कोई भी कस्टमाइजेशन में एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया. तो वहाँ से उसने एक दो चॉकलेट्स बनाई, अपने फ्रेंड को गिफ्ट करी, पर्सनलाइज चॉकलेट उसके नेम के साथ. उसे ये चीज़ बहुत पसंद आई, तो ये चीज़ हमने अपने स्कूल में फॉरवर्ड करी दिवाली के टाइम पे. क्रैकर शेप की चॉकलेट उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में थी क्योंकि क्रैकर्स बैन थे. तो वहाँ से ये चीज़ बहुत हिट हुई. वी गेट अ लॉट ऑर्डर्स वहाँ से, एंड आफ्टर दैट वो सेम चीज़ का हमने पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, और जब वो चीज़ें रन हुई तो हमें वहाँ से ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हुए आफ्टर सम टाइम्स. तो वहाँ से हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि इसी को आगे एक्सपैंड करना है. वहाँ से आगे हम लोगों ने कंपनी इनॉग्रेशन में कंपनी के लोगोस की चॉकलेट्स बनाई. सो आफ्टर दैट हम लोगों ने लोगों के एनिवर्सरीज़ के, पार्टीज़ के, डिफरेंट पार्टीज़ के चॉकलेट्स बनाने स्टार्ट हुए. तो वहाँ से ये बिज़नेस पीक आउट हुआ. थैंक यू, वंडरफुल. और आपकी कंपनी का नाम बताइए. माय कंपनी नेम इज़ डार्क चोकोबिट्स. और वो वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं? यस, आप अपने इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं. Great, thank you so much. So we have time for a couple of questions, and I know we are running out of time now. The first one, I'll just take it here ki how vocational training can penetrate public education in the most remotest area like Northeast, where infrastructure of school is a big challenge. And I think Vandana, we had spoken about this whole penetration as one of the topics. So maybe would you like to address? I'm not too well versed with the Northeastern education system, but I can share my experience how we worked with Government of Rajasthan, which is where when we started our work in Manzil, which is with Department of Education to improve girls' enrollments in vocational education for Rajasthan. The state covered only 2% of the school states offered vocational education. And we had identified few districts where the
enrollment was very, very minimal. So what worked was engaging with government in supporting in designing a VE policy, because NEP sets a target of covering 50% by 2025, 100% by 2030, but almost all states and the country is far behind achieving those targets. So it is important for a state to have a vocational education policy or an action plan in place which would set yearly targets or a district by district or a block by block school coverage. So having those plans are important because then budgets flow in. Second is creating demand by school principals. While it is a policy, many school principals, who is the main person to ask for it, may not be aware of it. So you have to orient school principals in creating demand for vocational education. In the last 3 years, of the 4,000 schools in Rajasthan that currently are offering vocational education, more than 20% were supported by us, and which was purely a deep engagement with principals in creating demand for it. And lastly, I think is leveraging the local MSME partners for internship. That is a big plus, and I echo what you both are saying, that giving exposure to girls and women about work adds a lot of confidence, and then it creates demand for whatever. Yeah. And just to quickly answer the question on infra, so we have tried the whole skills on wheels. So we started with one vehicle about 6 years back, and it traveled from Pune to Ladakh. And so that is one way where the school infrastructure is not there. The skills on wheels, and we'll be happy to share. Secondly, also toolkit approach. Normally, mostly the vocational education is combined with very big labs and very workshops and other things too. But we're also now piloting toolkit where you can literally do the skills in a bag or skills in a box. And otherwise, so that's also coming down the pipeline as well. I wish we could take more questions, but we are running out of time. Here it says very red. This thing time is up. So in closing, what I would like to say is that 10 years back when, or 15 years back rather, when Lenda India started this work, तो हमें vocational education बेचना पड़ता था. Parents will say that, oh, 10th का board exam है, you are taking away time. Why are you teaching gardening? Why are you teaching this? उनको marks नहीं मिलेगा. 11th में ये नहीं. So there was a lot of resistance we faced, and I must say that in 15 years time, it is a dream come true that it is becoming mandatory up to grade 10. Of course, now we are like, oh wow, ये तो हो गया, अब क्या करें, and all that. But we'll come to that. So I think our own focus for Lenda Hand India is going to be that how do we operationalize this policy, right? Because policy banana to nothing is easy, but it is less difficult. To getting it on the ground is where where it goes for a toss. So in fact, we are looking for NGO partners, other partners to be with us on this journey to sort of realize the potential what we have. So I'll close with the last clip now. In that. So can we please play clip number 5, please? Thank you. मेरा नाम वैशाली है. मैं ढाकना गांव की हूँ. मैं अमरावती में इंटरव्यू के लिए आई. पहले तो मुझे डर लगा क्योंकि पहली बार इंटरव्यू था मेरा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इंटरव्यू कैसा देना है, सिलेक्ट होंगी या ना होंगी. तब इंटरव्यू में 2-3 इंटरव्यू हुआ. उसके बाद में एक से इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई. तो अब हम औरंगाबाद जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बहुत खुश हूँ. पहली बार मेरे को जॉब लग गया. आई एम सो हैप्पी. You have been wonderful. Thank you. Thank you. Can we have another round of applause, please? That was absolutely a very, very inspiring session, very creative. Thank you, Raj.